आपके यूट्यूब पेज पे। कंटिन्यू करेंगे हम 2026 के वर्ल्ड कप का 2000 राउंड ऑफ 32। मुझे ज्वाइन किया है कंवर मोहम्मद ने फॉर द फर्स्ट गेम ऑफ टुनाइट, जो कि है स्पेन अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। एक्सपेक्टेशन तो यही है, स्पेन डोमिनेट करेगा। कंवर, हाउ डू यू सी इट? Should be no an easier game for Spain, but भाई कुछ भी हो सकता है। ऑस्ट्रिया भी बड़े हीरोइक तरीके से पहुंची है राउंड ऑफ 32 में, so another European teams combination of Spain and Austria, but like on paper Spain are of course the favorites, but the World Cup is all about the dark horses. So, and again we have not seen the Spanish team that you could like fear about. जैसे हमने फ्रांस के बारे में बोला कि यार they are on a very 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 next level, but Spain I just don't see them there as well. Maybe with the tournament as it progresses, they might become better, but for now they're still a level below what we expect from them. जिसको हम वर्ल्ड कप फेवरेट्स बोल रहे थे स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, अभी तक वो स्पेन, मुझे सऊदी अरब वाला मैच अच्छा था बट अगेन अ वेरी वीकर ऑपोजिशन, बट हमें वो स्पेन अभी उस लेवल पे नजर नहीं आई। वो स्पेन तो जब लमीन यमाल और निको विलियम्स दोनों स्टार्ट करेंगे तभी आपको दिखाई देगी। विदाउट देम लाइक स्पेन हैज ऑल द पोजेशन, बट लाइक वो थोड़ा स्टेराइल पोजेशन ही होता है। बट व्हाई दे आर नॉट स्टार्टिंग टुगेदर फॉर नाउ? क्योंकि दोनों हैमस्ट्रिंग इंजरी कैरी कर रहे थे कमिंग इनटू द टूर्नामेंट। प्लान तो उनका ये था कि दोनों को ग्रुप स्टेजेस में कम से कम खिलाएंगे, एंड देन वंस द नॉकआउट स्टेज स्टार्ट तो फिर वो उनको स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज तो दोनों को करना चाहिए था, लेकिन आई थिंक अभी वो एलेक्स बोइना इज एक्चुअली एलेक्स बोइना ही कर रहे हो। आई थिंक वही बात है, आई डोंट थिंक निको विलियम्स उतना रिकवर कर पाए। ही मिस्ड आई थिंक द लास्ट मंथ ऑफ द सीजन एज वेल विद इंजरी, तो आई डोंट थिंक उस तरह से रिकवर कर पाया होगा। एंड बोइना हैड अ गुड गेम लास्ट टाइम अराउंड, तो I think Nico will still come off the bench, but I think against the very best sides, against France, Brazil, Argentina वगैरह के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ, उनको दोनों को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रिया I don't think is like उस लेवल की टीम। Yeah, but like they still have players. I think they still have players, or like no, Sabitzer हो गया, Natovic हो गया, they have goal scorers in them, but I don't know how will this be. ऑस्ट्रिया 2018-20 के लगभग जो है ना, इतनी अच्छी टीम थी कि जब Alaba was at his peak, जब Natovic was at his peak, Sabitzer was coming through, तब आप ये कह सकते थे। I feel like अब मतलब Natovic is 37, Alaba है तो 33-34 का, लेकिन पिछले 4-5 साल से वो उसकी कोई रियल मैड्रिड में इतना रेगुलरली खेला ही नहीं है। तो एंड देयर इज नॉट वो आरबी साल्सबर्ग वाले कुछ खिलाड़ी हैं जो आ रहे हैं, बट अदरवाइज इतना कोई हाई क्वालिटी जनरेशन भी नहीं है उनकी। कांगो के साथ what are your predictions for the match? मेरी तो I would think at least 2 गोल से स्पेन को जीतना चाहिए। इतना फर्क है दोनों टीमों में, I feel like। Yeah, even the back four of Spain, like it really has not really struggled so far. They have been good, I think. और midfield में भी बहुत अच्छा है, और is the ball back on the score sheet, almost start करें, मतलब ओवरऑल टीम तो बहुत अच्छी है। आई थिंक करना तो चाहिए यार। ऑस्ट्रिया हैव नॉट लुक लाइक रियली द जायंट किलर्स और समथिंग लाइक दैट। दे हैव बीन डिसेंट इनफ, बट वो है कि दे विल स्ट्रगल एट द बैक, और जिस तरह से स्पेन थ्रेट करती है, शुड बी गेटिंग सम गोल्स इन देयर। और मेरी स्ट्रीम में मुझे वली ने ज्वाइन किया है। वली, क्या हाल है? प्रेडिक्शन यार, प्रेडिक्शन आई थिंक Spain should win this one, maybe 3-1 type score. वालेकुम सलाम साद भाई, क्या हाल है? नेशनल एंथम भी हो रहे हैं। आई डोंट थिंक, ऑल्दो अभी तक हमने इस टूर्नामेंट में आई थिंक सिर्फ फ्रांस, यूएस और मेक्सिको, ये टीम्स हैं जो मल्टीपल गोल से जीत पाई हैं।
कल I missed the end of the मतलब I had to go Belgium वाला match, so that was a tragedy. साथ I ही वो also left had to behind. sleep to मैं भी सो गया था. मैंने कहा था यार ये like I was actually rooting for Senegal in that match. हाँ वो मुझे तो लग रहा था everyone कि was यार like, मैं सोया नहीं था, मैं I had some other duties to take care of, like तो मैं साथ साथ देख रहा था. तो that was a साथ was I think still online. To me that was a tragedy जो हुआ है. like do you think that was a penalty? यार मतलब अगर आप न्यूट्रल एंगल से देखो ना तो फिर दैट्स अ पेनल्टी. जब आप कॉन्टेक्स्ट देखते हो ना कि द टीम दैट यू सपोर्ट यू आर सपोर्टिंग अमंगस्ट द टू और 190 मिनट है, तब फिर आपको थोड़ा डिफरेंट मतलब रोज कलर्ड ग्लासेस से आप देखते हो उस चीज को. वैसे लाइक आई थिंक टू बी वेरी फेयर वो पेनल्टीज पे वैसे जाना चाहिए था. हाउ वो टीम्स रियली यार वो है ना बेनिफिट ऑफ द डाउट समथिंग, बट ऑफ कोर्स दैट वाज अ पेनल्टी बिकॉज उसने बॉडी इन ले आया था और जब फाउल हुआ है तो मेरा ख्याल है वो पेनल्टी थी. लाइक साथ भाई आपका क्या ख्याल है? द फाउल ऑन टीलेमेंस यस्टरडे जो पेनल्टी थी बेल्जियम को 120th मिनट में दी गई थी, 120 प्लस 5 ऑलमोस्ट, तो पेनल्टीज पे ऑलमोस्ट जा ही रहा था. तो आई थिंक क्वाइट लकी, बट अगेन व्हाट अ कमबैक वैसे. मेरा इंटरनेट थोड़े इश्यूज कर रहा है. लेट मी ट्राई टू रीजॉइन. ओके बाय द वे जो मेरी स्ट्रीम से देख रहा है यार, स्ट्रीम जरूर लाइक कर देना. एंड इफ यू हैव नॉट येट फॉलोड और सब्सक्राइब द बिग बात ऐप, वो भी कर लेना सब्सक्राइब, बिकॉज वी आर स्ट्रीमिंग लाइव ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी मैच ऑफ द knockouts, and the round of 32 is almost finishing, and we'll be doing the same for round of 16 as well. And let me know your predictions in the comments as well. We'll taking the comments gradually one by one as well. तो मुझे अपनी predictions बताते रहें. स्पेन जीतेगी. अगला मैच तो बहुत तगड़ा मैच है, उस पर भी हम मैच के दरमियान में बात करेंगे. बट Portugal versus Croatia is also one of the hottest round of 32 matches. Both European teams, Ronaldo's last dance, बहुत सारा perspective है. Diogo Jota, 1 year of his passing away tragically in a car accident, तो वो भी हमारे पास next lineup है. But first we'll see Spain versus Austria. I hope it is not as one-sided as we have predicted. थोड़ा सा यहाँ पे टफ टाइम दे ऑस्ट्रिया स्पेन को, बिकॉज ऑन पेपर स्पेन लुक्स एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. साद भाई क्या ख्याल आपकी? वॉल्यूम साद भाई आपका मेरा ख्याल है कुछ शायद इशू है माइक का, आवाज ही नहीं आ रही. नो वी कैन नॉट हियर यू. सो अलाबा है भाई, केविन डैंसो है, श्लागर है. There have been some workhorses in the Austrian side, but no, overall in terms of quality, the quality is a bit far from what we have seen in the Spanish side. Sabitzer शायद कुछ कर ले because he has scored and assisted as well in the last games for Austria. Austria versus Algeria was absolute cracker actually, जिसकी वजह से दोनों टीमें आगे पहुंची राउंड ऑफ 32 तक. टू गिव यू अ brief perspective of what Algeria and Austria in that match, जो ग्रुप गेम था उसमें ऑस्ट्रिया एंड अल्जेरिया में से अगर कोई जीतता तो वो आगे चला जाता, और साथ ही साथ ईरान भी आगे चला जाता. Okay. So finally we are overcoming the technical issues and Saad bhai is already with us. Saad bhai, how are you and what are your I'm good. कैसे हैं आप और भाई? ठीक है. How are you seeing this match? All good. यार ऑन पेपर तो ऑफ कोर्स स्पेन लग रहा है कि 3-4 गोल मार देगी, लेकिन ऑस्ट्रिया का कोई पता नहीं यार. राल्फ रागनिक से मुझे कुछ ज्यादा वैसे उम्मीदें भी नहीं है. थोड़ा फ्रेगमेटिक
sort of manager है वो भी, but अगर तो कुछ थोड़ा deep block जैसे हमने केप वर्डे वर्सेस स्पेन वाला देखा था, लाइक अगर ऑस्ट्रिया वो करना मतलब कुछ करे तो फिर शायद स्पेन को वो रोक सकते हैं. Otherwise, I don't see them stopping the Spanish side. Well, lineup नहीं देख सका तो did we see any surprising changes or No, I are they think just it's pretty much the same for Spain. ओइज़बाल खेल रहा है, ओल्मो खेल रहा है, यमाल है, एलेक्स बोइना है, फिर रॉड्री है, पेड्री है, मोर और लेस. लेकिन यहाँ ऑस्ट्रिया अटैक पे है भाई. फर्स्ट अटैक ऑफ द गेम गाइस, सबिट्जर क्रॉस. I would love to see an early Austrian goal भाई, फिर तो मजा आने वाला मैच का बहुत सारा. लेकिन यहाँ लमीन यमाल ने बॉल ले ली है, काउंटर पे स्पेन, एलेक्स बोइना, लमीन यमाल. Oh भाई, good shoot, good save. This looks like end-to-end match now. This boy is exciting. Yeah, Lamine Yamal. No, what makes it crazy is कि वो किस एज पे इतनी ब्रिलियंट फुटबॉल खेल रहा है यार. मतलब 17-18 साल पे, you just cannot imagine like 17 साल का, and I think he's already won Euro और Pele won a World Cup at 17 overweight. और इधर तो मतलब he has more like the limelight of this very experienced भी बोलूंगा स्पेनिश साइड. तो वो एक और ही आप पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करते हैं. लेकिन वो प्रेशर उसने अपनी परफॉर्मेंसेस पे कभी दिखाया नहीं कि यार like I'm under any sort of pressure to perform. ओ भाई साहब, ग्रेट टैकल यार, ग्रेट टैकल. बहुत हाई लाइन खेल रही है स्पेन. Spain is pretty much playing quite high line. पेड्रो पोरो ने स्टार्ट किया है. हाँ जी, 4-3-3 खेल रहे हैं ना ये. हाँ, sort of 4-3-3 खेले. वैसे more or less ये develop into a 4-2-3-1 type structure जिसमें ऑल्मो नंबर 10 में आ जाता है and ओयारज़ाबाल is up top. और उसके बाद आपके पास जो दो पिवट में दो जो हैं पेड्री एंड रॉड्री खेल रहे होते हैं मेनली. बट बहुत हाई लाइन खेल रहे हैं भाई यहाँ पे. कुबासी ने बचा लिया. Another that second quick attack in very early in the game. Yeah. What a crazy dribble from Alex Boina. ऑस्ट्रिया का अच्छा स्टार्ट है भाई. स्टार्ट ऑफ द मैच आई थिंक decent enough from Austrian side, but I don't see the reason Spain playing too much high line. Oh, I think this is why they are playing. चल यार, चल. इतना slow. He slowed it down. कर गया ना. Lamine Yamal corner. I think the purpose of playing so much high line is just don't let Austria come into their own half. So वो थोड़ा pressure रखें, थोड़ा pressing रखें just from the start जब Austria ball लेके आ रही हो. I think this is one of the reasons Spain is going with a high line. But it could be it's a short corner. Need a good cross. Cleared. Cleared. Now Austria no attack. Marcel Spitzer. Bhai sahab, good They ball. would be relying a lot on counters also. Austria definitely. Yeah. Spitzer had the ball.
Sabitzer. क्योंकि यहाँ पर ये बात है 1-0 if it goes to Austria it's going to be good. It's going to get very exciting. Very 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 crazy game. जिस कल जैसे हमने कोंगो वाला मैच देखा था and they went 1-0 up, तो फिर आगे कुछ भी हो सकता है. Wait. Is it on? Off, sir? Oh, no. Offside. Offside. Decent enough start for Austria. I'm still heartbroken honestly, I'm still heartbroken from that Senegalese match. Uska, what's your take on that? Kaisa, did you यार मुझे तो it was really heartbreaking for me. I really wanted them to go through. Congo versus England? मैं Senegal वाला मैच पर. Senegal versus Belgium. Yes. या लाइक मुझे तो फीलिंग पहले जाने से पहले ये आ रही थी कि यार सेनेगल शुड बी गोइंग थ्रू दिस मैच, और जैसा उन्होंने स्टार्ट किया, हाउ द फर्स्ट हाफ वेंट and from 2-0, like I didn't expect Belgium to come back from 2-0 easy. Nobody they played their football in the last 10 minutes. It was Olmo, I think it was Olmo. Yeah, it was Danny Olmo. ये बड़ा fast paced match होने वाला है मोहन भाई. Yeah, looks like it. Alex Boina, Cucurella, new Real Madrid player, जिसे Real Madrid ने वर्ल्ड कप के दौरान ही साइन कर लिया है, and for a wealthy 50 million deal out of nowhere, Cucurella has joined Real Madrid. Another corner for Spain. Oh bhai, another corner. It's a goal kick for Austria, and now Lamine Yamal is on the ball. Lima versus Lamine Yamal is gonna be a good, I think, good battle. Like Lima playing for Bayern Munich, Lamine Yamal playing for Barcelona. They've already played against each other. But Pedro Porro is gonna be a threat. I think Pedro Porro is gonna be a threat on that right hand side. I've been noticed Spain's vulnerability is not in position. I think it's in transition. When they lose the ball high up the pitch, वो उनके full backs are basically caught up, और वो फिर वो space बहुत बड़ी create हो जाती है. Welcome back, Sanbhai. Spain with a throw in. Cucurella. Oh, good ball.
Olmo. Free kick for Spain. Listen, it's going to get very interesting if Austria scores first. But like I know कि अभी तक काफी ग्रुप्स ऐसे हुए हैं, काफी नॉकआउट्स ऐसे हुए हैं where both teams have had chances, but ऑस्ट्रिया बहुत ही मुझे ना फ्लैट ट्रैक बुली टाइप टीम लगती है. Flat track bully. कि मैं इनका जरा कंपेटिटिव रिकॉर्ड निकालता ना दिस अभी ये जो वर्ल्ड कप में जीते हैं दैट वाज देयर फर्स्ट विन सिंस 1990. पिछले 2 यूरो खेल गए हैं, बट उसमें भी if I look at the team that they won against, let me have a look. They won against Ukraine and North Macedonia in 2020. And in 24 they won against Netherlands. So basically Netherlands is the closest thing to a good team they've beaten in the last 35 years. But Netherlands को भी हम देख लिया कि like that's a team which is like open for upsets. So if Yamal scores today, he would become the youngest player to ever score in a knockout match. It was Pele first, right? He's not as young as Pele though, right? Excellent. He's 17, right? Yamal is 18. He's going to turn 19 in 10 days. Pele was 17 during the 58 World Cup. He already broke that Messi's record of scoring in the World Cup. I think the youngest player. Messi से ऊपर आ गया. Top 5 में आ गया. I think top 5 में top 4 में आ गया. The youngest player to score in a World Cup. Messi से ऊपर आ गया. Messi का उसने तोड़ा है इस World Cup में. After scoring against Saudi Arab वाला मैच जो था उसमें. हाँ वो like it's not in that Pele वो वाली एज भी नहीं है. हाँ yeah.
अगर इधर से स्पेन जीतती है तो राउंड ऑफ 16 में कौन मिलेगा? Let me have a look. 2026 का पोर्चुगल क्रोएशिया के विनर से होगा. That would be fun. Portugal versus Spain, It's the one game. round of 16 coming on. Like at least on paper, I say, but I don't see the upsets in there. मतलब वो midfielders दोनों जो हैं, they're such good midfielders. It'll be such a fun game. Acha, like this game is just going against what we expected. Like you expected Spain to keep most of the ball, but यहाँ Austria यहाँ पे हमें ball possession रखती हुई दिखाई दे रही है. So this is different from the Spanish side. Spain is playing way high line. Back line देखें यार, half line पे आ गई उनकी. Half line पे उनकी. हमेशा वो तो basically since 2008 वो इसी line पे खेल रहे हैं. That is what Netherlands exploited in 2014. Yeah. 5-1 वाला मैच जो था. Oh, good cross. Go. नहीं भाई. That was close. Good cross from Sabitzer. यार, he should have done better यार with the header. Just didn't even touch it. I feel like Spain are still vulnerable. Like, I keep coming back to the Austria isn't the team that makes me think they'll find those passes. Yeah, like Spain have the quality to hurt. Even Austria score तो वो है कि Spain के पास quality तो है. Hassan bhai, how do you see Pedri? Like, do you see him as a number 10, number 8, number 6? Oh, good. Oh, caught by the keeper. Just सवाल था. So coming back to the Pedri question, like, do you see him as a number 6, number 8, like Bellingham? या फिर as a number 6 in the double pivot? नहीं वो not even number 6 is like वो चाबी वाला रोल था कि basically that central midfielder not too far forward as part of मुझे एक बार्सिलोना के midfield का हमेशा होता है. Similar to like Kroos Modric वाला रोल था, somewhere around there I feel like. Yeah. So not really a 10, not really a 6, 8 even. 8ish, yeah. Limer versus Yamal is gonna be a great battle today. Limer is a very good. And it's very interesting that they've played Limer on the left क्योंकि वो इतना so much of his career is playing on the right. अब उसको लेफ्ट पे खिला रहे हैं. वो मेरे ख्याल दोनों तरफ खेल लेता है वैसे बायर्न के लिए भी आई गेस. आई थिंक बायर्न के लिए भी वो दोनों तरफ खेलता है. बट आज तो उन्होंने स्पेसिफिकली जमाल के लिए खिलाया. Limer still at Bayern? हाँ मेरा ख्याल है. आई थिंक इज बायर्न. Danso. Still 0-0 guys. 20 minutes gone. And I will say this has not been very easy so far for Spain. Like Austria have had Still their chances. Yeah, they are still getting into their zone, their vibes. What we have seen Spanish team all about, but we'll have to see.
Like Sabitzer is complimenting Lima because I think Sabitzer is a good tackler of the ball. वो workhorse है, वो work rate लेके आता है. So he will track back down and compliment Lima on that left where they have to. No, मतलब आप लमीन जमाल को अगर इस स्पेन में स्टॉप कर लो ना, you will almost stop the Spanish side going forward to an extent. वो चीज है. लमीन जमाल को अगर आप रोक लेते हो, that's going to be big win for Austria. Oh, good ball. Oh, it's the ball. Damn, so good one. Schlager. And ladies and gentlemen, we are at the point which we didn't want because the hydration break is here. Feels more like a hockey game when you see hydration breaks in between or वहाँ quarters में जो game होती है. But in football, I don't know. Sumit, do you think UEFA would ever introduce this hydration break into the? They shouldn't. Like मतलब ज्यादती है ना यार. अगर एक टीम ने थोड़ा टेम्पो रखा हुआ है, रिदम रखा हुआ है, it breaks everything. सारा वो जाया हो जाता है. सब कुछ जाया हो जाता है. Like it's like half time, starting from half time. और जैसे हम बोलते हैं ना, फुटबॉल इज अ गेम ऑफ 2 हाफ्स, तो वो फिर खत्म हो जाता है ना. फिर अब तो 4 हाफ्स, वो 4 हाफ आ जाते हैं. क्वार्टर बन गया ना, हॉकी बन गई. अब तो वो क्वार्टर बन गया, तो वो तो फिर like I think should not be introduced. Like I don't see it. और यूरोपियन नेशंस में तो वैसे भी मतलब जरूरत भी नहीं है यार. मतलब वैसे ही ऑलमोस्ट मौसम ठीक ही होते हैं मोस्ट ऑफ द ईयर. आज इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है. लाइक हसन भाई का भी हो रहा था, मेरा भी कर रहा है. What's going on? Yeah. I think मुल्क में इंटरनेट डाउन होगा, जैसे सिचुएशन लग रही है. I think it's more on the slower side, just like the Spanish team right now.
यार बड़ा प्यारा स्टेडियम है यार। ये कहाँ हो रहा है मैच वैसे? I didn't see that. Is it in US? अटलांटा है, कहाँ पे? सॉरी, आई थिंक अटलांटा है नहीं ये, एटलांटा। श्योर। ऑस्ट्रिया लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस। ब्यूटीफुल स्टेडियम। लाइक मुझे क्राउड के पर्सपेक्टिव से ना ये वर्ल्ड कप वैसे देयर वर क्वेश्चंस के will the crowd be good enough for this World Cup like we saw in Qatar and everything. It has been a very decent crowd so far in the World Cup. हमने हर मैच में हमने ऐसा नहीं देखा कि कहीं कोई सीट्स कहीं एम्प्टी हो, कुछ हो, लाइक एंड व्हाट वी हैव सीन इन द स्ट्रीट्स एज वेल। हर कंट्री के फैंस जो हैं वो पहुंचे भी हुए हैं सपोर्ट के लिए, तो इट्स क्वाइट डिसेंट। प्लस जैसे लोग कह रहे थे कि वीजा के बहुत इश्यूज आ रहे हैं यूएस जाने के, और इस तरह के कईयों को अलाउ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो एजेंडा टाइप था। बट सो फार इट्स बीन डिसेंट इनफ आई थिंक द वर्ल्ड कप ओवरऑल। और अटैकिंग पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि वी हैव सीन सो मच गोल्स इन देयर एज वेल, सो मेनी हैट्रिक्स एंड एवरीथिंग। वो चीज भी है एंड इट मेक्स इट एक्साइटिंग। गुड बॉल पेड्रो पोरो, व्हाट अ बैड क्रॉस दैट वाज, व्हाट अ बैड क्रॉस। पेड्रो पोरो ही था ना आई थिंक, व्हाट वाज दैट क्रॉस? No look pass from Lamine Yamal. No look pass. So far, Austria have defended quite well, but for how long they will keep doing this is a very very big question. Oh boy, Olmo! Oh. What a touch! What a touch from Denny Olmo in there. Hi, crazy touch. This was like Dennis Bergkamp rolling down the years. Like, oh, hi. Brilliant. Great touch. And great defending actually as well. वरना पक्का गोल था ये तो। Corner for Spain and goal. Hey, there you go. It's 1-0. It's 1-0. Mark Cucurella. Great call. Cucurella. एक तो निकाला है। Disallow? Yeah. So he finally has. उसने किया था his first goal as a Real Madrid player. Now he's actually got that. तो क्या I think disallowed. I think disallowed. Okay. Cucurella को गोल नहीं करने देंगे इस वर्ल्ड कप में। पहले उसका क्या था? That was ended up being an own goal. या वैसे क्लोज करना था ये। अब इस पे ना ये मुझे ये बड़ी है, लॉट ऑफ टीम्स आर डूइंग दैट, पहले भी होता था, बट दिस इज वेरी इट्स वेरी हार्ड फॉर द कीपर। ही कांट रियली टेक हिज वन नी आउट और go to grab the ball. It has to be the punch. और वो उसका फिर जब नहीं होता, उसका बिल्कुल ही जब कंजेस्टेड हुई होती है जगह, तो वो we saw a mistake or two as well in the last few matches. यार लेकिन मतलब हमने प्रीमियर लीग में पूरा सीजन इस तरह के गोल देखे हैं यार, मतलब वहां पे कुछ ऐसा वो इन्होंने नहीं कुछ किया। आराम से आर्सेनल ने इतने गोल ऐसे स्कोर किए होंगे। They used to crowd the penalty area. So if you are making a rule, it should be implemented in all of the formats or at least consistently. लेकिन वो उस तरह से अप्लाई नहीं होता। अब जर्मनी वाला मैच देखें, वो जो जोनाथन टा का गोल चला हुआ था, आई थिंक वो इतना भी क्राउडेड नहीं था, वो तो बड़ा सॉफ्ट, मतलब ये तो बहुत ज्यादा था। ये तो चले मैं कह सकता हूँ कि ये डिसअलाउ होना शायद बनता था,
बट लाइक जोनाथन टाव वाला था वो तो बहुत ही हल्का सा टच था तो उसने वो गिर गया और वहां पे फाउल दे दिया, वो डिसअलाउ कर दिया. So I don't know how consistently this decision has been followed, but to be very honest, इस वर्ल्ड कप में it's been pretty consistent, and I think before the World Cup भी बात हो रही थी कि वो जो प्रीमियर लीग आर्सेनल वाला स्टाइल है, they won't allow that to work in this World Cup. So they've been true to their words, I guess. हाँ ये तो है. आपका क्या ख्याल है, मतलब the football is turning soft now या मतलब this should have stood? नहीं, this is better for football, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है गोल करने का जो पिछले 2 साल से प्रीमियर लीग टीम्स कर रही हैं. Arteta dislikes your comment. I don't care. भाई प्रीमियर लीग चैंपियंस तो है ना, ये तो फिर ये कि प्रीमियर लीग टाइटल उसने इस फुटबॉल से निकलवा लिया है. I remember it used to be back in the day, it used to be कि जी प्रीमियर लीग में कीपर्स को चैलेंज किया जाता था, बाकी लीग्स में नहीं होता था और इंटरनेशनल फुटबॉल में भी नहीं होता था. इंग्लैंड वाले हर टूर्नामेंट में कंप्लेन करते थे बिकॉज दे वर सोल कैम्पबेल हर वर्ल्ड कप में एक गोल कर लेता था विद चैलेंजिंग द कीपर, बट दैट्स जनरली बीन ट्रू आउट ऑफ इंग्लैंड फॉर एटलीस्ट मोस्ट ऑफ माय फुटबॉल वाचिंग हिस्ट्री. Is it a save? Oh my god, what a save! Good save. What a save, yaar. I think it was Oyarzabal. Good save, yaar. Nice. He's a very underrated goal scorer, actually, Oyarzabal. Very underrated also. Oh, the thing is कि ये जो बास्क प्लेयर्स होते हैं वो एथलेटिक बिल्बाओ या रियल सोसिएडाड को बहुत ही कम छोड़ते हैं. लाइक ओयारzábal has been at Real Sociedad his entire career. Even though he is now a top 10 goal scorer in Spain की history, I don't see him moving from there. मतलब वो छोड़ते हैं तो for like a big चैंपियंस लीग क्लब या जिस तरह जो पास्ट प्लेयर्स का उनकी टीम्स के साथ जो कनेक्शन है वो फुटबॉल में बहुत कम ही आपको देखने को मिलता है. वो पास हुए ऑफसाइड था. तो मैं कहने लगा था वाज ही ऑन द टॉप. अभी तक तो जमाल को इन्होंने सही केटर किया है वैसे ऑस्ट्रियन टीम में अभी तक. हाँ, पर अभी तक कितनी देर हुई है? It's barely a third of the game gone. हाँ ठीक है बस, लेकिन like they have not allowed him that much space on that side जहाँ पे वो बहुत threaten हो सकता है. Could be a good cross from Austria. अबे यार, good header, cleared. Alaba ही था. Playing from the back. The Austrians don't want to press them. They know they will leave spaces behind. कोई मसला ही नहीं है. अच्छा जी, तो मेरी स्ट्रीम पे मानूर ने मुझे ज्वाइन किया है. हाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस? जो ज्वाइन कर रहे हैं यार, प्रेडिक्शंस बता दो कमेंट्स में. एनीवन हु इज ज्वाइनिंग ऑन माय स्ट्रीम, एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द बिग बात ऐप तो वो भी कर लो, बिकॉज वी आर डूइंग स्ट्रीम्स ऑलमोस्ट डेली ऑफ एवरी मैच एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय द स्ट्रीम्स and the reactions as well. But let me know your predictions about Spain versus Austria. Who will be the goal scorer?
So far, it's been an exciting contest, I think. यहाँ चांस बन सकता है. Oh, good, cleared. Pedri, Kukuya. Goal! Or is the ball? क्या बात. Spain has scored. Yeah, he got his Kukuya goal. gets 28 assist. for Spain now. Yeah. Kukurela gets the assist. चलें, गोल नहीं मिला, assist मिल गया. There had to be a goal in the That first half. that was a long time coming. Long time coming. मैं खाली ऑफसाइड चेक कर रहे हैं उसका. Yeah, let's see. It looks on for me. और इस बॉल को इतनी स्पेस कौन देता है यार पेनल्टी एरिया में. खाली खड़ा हुआ था. उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है. वो स्पेस देता नहीं, वो स्पेस खुद लेता है. ये लाइक उनके सेंटर बैक के पास और कोई मतलब पेनल्टी एरिया में इतना कोई थ्रेट तो है नहीं. यहाँ पे एक स्ट्राइकर है भाई, उसको तो रोक लो. डेनी ओल्मो होगा एज ऑफ द पेनल्टी एरिया या ओइज़ाबाल होगा इन द पेनल्टी एरिया. तो इतनी ज्यादा तो मूवमेंट उसकी अच्छी है वैसे. फाइव 1 की प्रिडिक्शंस भी आ रही हैं गाइस. 5-1 5-1 की प्रिडिक्शंस भी आ रही हैं. वैसे what do you guys think about potential Portugal versus Spain round of 16 game? ऑल्मो को इतनी स्पेस दे दी है. और इज द बॉल हैंडबॉल. Almost 40 minutes gone and Spain is leading Austria 1-0. और अभी तक तो as per script almost जा रहा है मैच. On paper जैसे हमें स्पेन स्ट्रॉन्ग लग रही थी. Slowly getting into their rhythm. And when they get into their rhythm, they can really demolish you.
जैसे कि हमने सऊदीया वाले गेम देखा एंड this also looks like the same sort of scoreline. Portugal 4-4 4-4 किस मैच की प्रेडिक्शन है भाई? 4-4 नहीं हो रहा 4-4 तो नहीं हो रहा यार। जो मेरे चैनल पे देख रहे हो यार, लाइक कर दो स्ट्रीम दैट ये 4-4 करवा दिए, किसने करवाया? 4-4 जो है ना प्रेडिक्शन आई है हमारी स्ट्रीम में, मेरे ख्याल है पोर्चुगल और क्रोएशिया के मैच की आ रही है। ओह, वो भी थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं लगे आप, जिन्होंने भी प्रेडिक्शन दी है काफी ज्यादा। बट स्टिल उनका अपना रवैया, वो ऑब्वियसली उनका अपना एक पोर्चुगल के 4 गोल करेगा कौन पहले, तो ये बताओ भाई। रोनाल्डो तो नहीं कर रहा, बाकी का मुझे पता नहीं है, लेकिन 4 गोल करेगा कौन पोर्चुगल में, पहले तो ये बता दो। पॉइंट ब्रूनो फर्नांडिस कर ले तो मजा आ जाए, बट नहीं कर रहा भाई। तो मैं ये सोच रहा था कि दिस शुड हैव बीन अ गोल द फर्स्ट हाफ फ्रॉम ऑस्ट्रिया, फ्रॉम स्पेन मोस्ट लाइकली, बट यार गोल हो सकता है। सबिट्जा या गोल यार मिस कर दिया, अब तो मिस कर दिया, अब तो इन्हें पड़ेगा उल्टा। शुरू में ना ऑस्ट्रिया ने उनको तेज खिलवाया है स्पेन को। They were actually controlling the pace. Yeah. For Spain, it shouldn't be a problem, but I mean the fact that because they're coming from a 3-3 draw, right? From which and they survived elimination. So seeing that sort of a team doing this is pretty impressive. Yeah. Good run. Pass कर दो यार, दे देता उसको, पास कर दो यार। Highline, you are always at risk with Highline, but I don't know why Del Bosque, नहीं sorry, De La Font जो है ये prefer करता है Highline, but because you are always at risk, मतलब आपके लिए 1-0 की लीड तो फिर कुछ भी नहीं अगर आप Highline खेल रहे हो तो फिर कभी भी आप खोल सकते हो पीछे। I think he trusts his center backs a lot, like Kubasi and Laporte खेल रहा है आज, Emerick Laporte. It's a foul. Foul on Oyarzabal. Lamine Yamal on the right hand side. Lima catching. Pedro Porro, decent cross but cleared. Alex Boina to Kukuya. To Kurela again. और ये बॉल गिव अवे कर दी है रॉड्री ने। गुड पास, निकाल दो विंग पे भाई। गुड। Sabitzer need to change. अबे यार ब्रिलियंट। या ओ भाई साहब, या गोल हो सकता है, या ऑस्ट्रिया का गोल हो सकता है, लेकिन अब नहीं होगा। अब बस they're pushing hard again Austria, which is a really good sign. Yeah. Offside हो गया। I think the Spitzer ball was a bit early. लेकिन अच्छी रन मारी थी यार। Austria has been looking good. They look promising. Yeah. तो यहाँ वाली बात है कि अगर हो जाता है ना 1-0 to Austria, मजा आएगा। Yes. Good. भाई सेंटर खाली, सेंटर। चलो। Actually, the thing is that they cannot afford to push so many bodies forward in the box. क्योंकि उन्हें पता है कि यार वहां पे अगर हमने अटैक की ना, लालच की थोड़ी सी, और पीछे हमने खुल जाना है, so they will be getting out of their positions. और स्पेन बहुत तेज है यार, वो फिर आपको within split seconds आपको खोल देगी. This is
what they fear, and that's why they are not pushing so many bodies into the box of Spain. क्योंकि जब वो अटैक के लिए जाते हैं तो आपको 3 या 4 और पीछे 6 स्पेनिश डिफेंडर्स नजर आ रहे होते हैं. So this is the problem. They are not getting crowded in the Spanish area. But at some point in the match, they will have to do it because वरना तो it will be very simple for Spain. In a promising position. I think their set pieces deliveries have been very ordinary so far. Like corners, बहुत ही ordinary थे. मतलब I don't know why Alex Boina takes the corners. Like he's not even good enough. Why? ओ ये क्या था? ओ भाई साहब. Save हुआ है. ओ भाई. Double save. भाई श्लागर की क्या सेव्स हैं, 2 सेव्स. फ्री किक सेव की उसके बाद लमीन जमाल वाला एफर्ट तो इट वाज पुअर. देखते हैं बाय जमाल स्टैंडर्ड्स. बहुत जबरदस्त सेव किया है उन्होंने. द बॉल वाज डिपिंग एंड पोस्ट पे लगी. अच्छा it was going away from. Yeah, but Jamal should have scored from here यार. मतलब how can you miss from there? So guys, we are approaching half time and Yamal को नहीं भाई, Yamal का आज का दिन नजर नहीं आ रहा मुझे. Limer is absolutely tackling him everywhere on the field. But another challenge. फ्री किक ही नहीं दी यार ऑस्ट्रिया को. Just last minute before the final half. Last minute. को बार्सी यहाँ इंजर्ड हो गया I think. But a brilliant effort from Alex Boina. Yeah. There was an save देखें यार. सेव उससे भी अच्छी थी यार. सेव यहाँ से जमाल को रोकना भी तो हुआ है. अच्छा सेव उसका फिंगर टिप्स लग के फिर पोस्ट पे लगा है. Good save. Schlager boy, RP Salzburg wala, right? The keeper, yeah. He's been at Salzburg since 2023. Yeah. Champions League वगैरह भी खेलते रहे. think a few seconds till we get to the half time. Last attack ही होगा I think Spain का. Half time भाई. Half time Spain 1-0 Austria. So far I think it's been a good watch. Like it's not been really boring. Austria have looked good on the counter, and as we have talked about that they cannot afford to put more bodies forward just because they will get out of position and Spain will eat them on the counter then. तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा pragmatic approach के साथ थोड़ा खेलना पड़ा है पीछे. And what do you guys say like about the first half? क्या लग रहा है आगे after seeing the first half? Yeah, to be honest, like Austria की तरफ से there's just not enough threat from them, and I don't know if that threat can come in any way. Because a lot of their players are like they do a job, but against a high quality team, Spain will have to make a mistake type stuff. उनको कुछ करना पड़ेगा, and the fact that they're
conceded a goal, that is where there's only so much you can do. I didn't expect much from this game, and it is going as I expected. Yeah. लेकिन वही बात है ना हसन भाई, उनको फिर थोड़ी बॉडीज, मतलब जब वो अटैक पे जाते हैं तो 6 बंदे स्पेन के खड़े होते हैं और 2 बंदे उनके होते हैं, तो वो जो एक न्यूमेरिकल डिफरेंस है ना, वो भी तो एक मसला है. इवन दे हैव ट्राइड टू अटैक स्पेन ऑन द काउंटर, नो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द हाई लाइन, लेकिन वो ये है कि यार बंदे आगे भेजने पड़ेंगे अगर गोल करना है, वरना तो गोल नहीं हो रहा उनको, कुछ नजर नहीं आ रहा. साद भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Yeah, I agree with Hasan bhai, but I honestly in the first few you could say the first quarter I could see a goal coming from Austria though, but you know मैं यही कह रहा था कि शुरू में they were actually controlling the pace, and which is very exciting for me to see from coming that from Austria. The way they played in the group stages, but then again it's all Spain, और वही वाली बात है कि it's gonna look like it's going to be Spain for the rest of the match, the way they've ended the first half. Yeah. Any substitutions from the Spanish side लग रहा है आपको कोई होगी अभी half time पे? I think they might rest, if they get a second one, they might rest Yamal for this game. Try to protect him as much as possible. Yeah. उसके अलावा like standard ही होंगे. वो मिकेल मरीनो को ले आएगा मे बी. निको विलियम्स आ जाए शायद. मे बी कुकरेया को, निको को थोड़ा और गेम टाइम मिलेगा. Yeah. That मतलब ऐसा ही है. गावी को कोई चांस मिलेगा? I doubt it. वो उसको पहला गेम खिलाया था उसके बाद ही है. And he was like very poor. Like मेरा ख्याल है वो अपनी सही पोजीशन पे भी नहीं खेल रहा था उस गेम में. But I think from what we expect from Gavi, I think he was far off in that game. Cap Verde वाला तो गेम था. But yeah, Danny Olmo might be subbed maybe. वो हमेशा होता है वैसे. ऑस्ट्रिया के पास तो कुछ खास मेरा ख्याल है बेंच पे भी नहीं है यार, वो गेम चेंजर कोई. अच्छा, मैं आपसे पूछा था, शायद इंटरनेट आप लोगों का इतना अच्छा नहीं चल रहा था, कि व्हाट डू यू गाइस foresee about a potential Portugal versus Spain round of 16 clash? क्या लग रहा है आप लोगों को? Oh, I think Spain would be the favorites in that, but it'll be fun. Portugal need to sort out a lot of things. But like Portugal has the midfield and the fullbacks to hurt Spain, which it can be a fun game. Saad bhai, what do you think? Yeah, I agree. Yeah, it's going to be very expensive. Basically, Portugal I don't really expect a lot of too many attacks from their side, because they've been struggling on that front. The final three, the last three, they basically I don't really see apart from obviously Ronaldo, कुछ भी हो सकता है definitely, but when you talk about when I see Spain versus Portugal right in front of me, definitely I would favor Spain. The way they've been playing, लग ऐसे ही रहा है कि that would be a 2-0 kind of match, to be honest. यार मतलब काफी लोग पोर्चुगल की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, और मतलब करते हैं ऑन पेपर उनकी साइड ठीक है, बहुत अच्छी है, बट फ्रॉम पेपर एंड ऑन फील्ड मतलब बहुत ज्यादा मैसिव डिफरेंस है इन क्वालिटी जब व्हेन यू सी द फुटबॉल इन देयर. और मेरा ख्याल है उनके विंगर्स जो है ना, आई थिंक दैट आर द रियल प्रॉब्लम. लाइक व्हेन यू सी देयर विंगर्स नॉट being providing that much service to Ronaldo, and when they are even crossing the ball, the crosses are a bit far off. Like कोई quality आपको नजर नहीं आती. मतलब पेड्रो नेटो का, I think हसन भाई, correct me if I'm wrong, पहले कभी इनका नॉकआउट मैच नहीं हुआ ना स्पेन और पोर्चुगल का?
Knockout. I नॉकआउट feel like I might have seen it. एक second. नॉकआउट मुझे आई थिंक ग्रुप हुआ स्टेज है, का याद है. आई थिंक हुआ है। I think 2010 में नहीं हुआ था. स्पेन वर्सेस पोर्चुगल हुआ नॉकआउट यार। याद नहीं पड़ता 2020 का. हाँ, क्वार्टर फाइनल in 2010. क्वार्टर फाइनल में और फिर 2012 में भी हुआ था. Semi-final, which Spain won on penalties. 2025 में नेशंस लीग फाइनल हुआ था। नेशंस लीग में टूर्नामेंट नहीं गिनता. यार ये तो अब ज्यादती कर रहे हैं रोनाल्डो के साथ। It is what it is. हाँ नहीं वैसे सही बात है, तो सही। अच्छा जी हाँ 2010 ही हुआ है, 2010 राउंड ऑफ 16 स्पेन 1-0 डेविड विया ने गोल स्कोर किया था। दैट वाज द लास्ट टाइम दे एंड दैट वाज आल्सो राउंड ऑफ 16, तो इस साल भी राउंड ऑफ 16 ही हो सकता है। और उस साल स्पेन वर्ल्ड कप जीती थी। इट्स 1992 ऑल ओवर अगेन। लेकिन उस साल तो वाकई यार फेवरेट्स लग भी रहे थे। लाइक 2010 वाली स्पेनिश टीम बहुत क्लास थी यार, बहुत। But first, Portugal will have to overcome Croatia in their later. Like Croatians को वो है कि खुद तो नहीं जीतेंगे लेकिन जीतने भी नहीं देंगे, उनकी वो वाली बात है। तो उनका जैसे they have always knocked out the bigger giants of the World Cup in the last. मेरे ख्याल है क्रोएशिया ने पेनल्टीज पे ब्राजील को आउट किया था लास्ट वाले वर्ल्ड कप में 2018 में, सॉरी 18 में 22 में 18. क्रोएशिया वर्स 18 में। उसके पहले मेरा ख्याल है शायद नेदरलैंड्स को भी एक वर्ल्ड कप में आउट किया है। फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया जो फाइनल हुआ था 18 में, वो भी। तो क्रोएशिया हैज बीन अ डिसेंट, बट अभी भी वही है कि अब उनका एजिंग फैक्टर है और वो क्वालिटी शायद क्रोएशिया ना दिखा पाए। लाइक मॉड्रिच एट 40 इयर्स ऑफ एज वो मिडफील्ड में खेल रहा होगा, क्वाइट गेट रन ओवर विद द लाइक्स ऑफ विटिनिया, ब्रूनो और जाओ नेवेस अगेंस्ट पोर्चुगल। तो वो है कि थोड़ा मुश्किल होगा। अगर वो एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टीज तक ले जाते हैं किसी तरह, तो फिर गेम काफी हो सकता है यार उनकी फेवर में शायद। आई थिंक अभी तो सुबह 8 बजे एक मैच भी है ना, स्विट्जरलैंड वाला मैच है ना। स्विट्जरलैंड का मैच है 8 बजे भी है पिक्चर, नेक्स्ट तो 4 बजे है। हाँ 4 बजे, फिर 8 बजे है। कल रात को कोई बहुत एक्साइटिंग फिक्सर्स नहीं है आई थिंक। कोलंबिया का मैच है आई थिंक, और कोलंबिया घाना एंड द अदर वन इज और वो मेरे ख्याल से शायद 10 बजे आई थिंक एक 10 बजे, एक शायद 12 बजे। वो होगा ना यार, अल्जीरिया का मैच होगा, अल्जीरिया वर्सेस क्या नाम है, नहीं अल्जीरिया वर्सेस स्विट्जरलैंड अब होगा। इजिप्ट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा कल का मैच, वो भी रह गया।
Jamal should have scored from here. इससे ज़्यादा easy chance तो नहीं मिलेगा उसको. वैसे in terms of player characteristics ये इस तरह से स्पेनिश साइड बहुत ज्यादा वो है यार कि मतलब हर तरह की क्वालिटी का प्लेयर है उनके पास. अगर आप विंग बैक्स देखो, पेड्रो पोरो एक डिफरेंट टाइप ऑफ फुटबॉल लेके आता है. उसके बाद वो मार्कोस लोरेंटे है, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है. तो मतलब आपने जिस टाइप का प्ले खेलना है ना, आपको उस टाइप का प्लेयर आपके पास मौजूद है. तो इस उससे इनकी साइड जो है ना बहुत ज्यादा क्वाइट फॉर्चुनेट, क्वाइट लकी एंड क्वाइट वो है कि द टाइप ऑफ फुटबॉल यू वांट टू प्ले, आपके पास उस टाइप का प्लेयर आपके पास बेंच पे मौजूद है. और आपने फॉल्स नाइन खेलना है, आपने जिस भी तरह की फुटबॉल खेलनी है, आई थिंक लाइक लेफ्ट बैक देख लें, ग्रीमाल्डो भी है. कुकुएरा खेलना है, हमने कुकुएरा को खेलना है. ग्रीमाल्डो इज लाइक स्टिल लाइक आई थिंक ही साइन फॉर एथलेटिको लास्ट वीक, और वो बहुत अच्छा फैंटास्टिक फुटबॉलर है ग्रीमाल्डो.
So guys, the news is coming that Diogo Dalot might be starting today for Portugal versus Croatia, and there is a high chance that Bernardo Silva is also going to start for Portugal as well. So that match is shaping up nicely. Dalot, when he came against Colombia, I think it was quite decent. Like मुझे तो ये फील आ रही थी कि डियोगो कोस्टा के बाद सेकंड बेस्ट प्लेयर उनका डालो ही है with how terrible they were, you know, up front. So I think deserved a start maybe. Could do better, I think. Defensively तो नहीं, but attacking wise I think it's a bit sound. यहाँ पे substitutes हो चुके हैं, श्लागर और सीवार्ड चले गए हैं ऑस्ट्रिया की जानिब से, and ग्रिलिश और चिकुइका आ चुके हैं on the field. And the Spanish are unchanged from the first half. The second half is about getting underway, and we'll be covering that live as well. So if you are joining the stream just right now, भाई तो like कर दो stream को, and do let me know your thoughts in the comments. क्या लग रहा है? If there is a comeback from Austria, या फिर यहाँ पे स्पेन वन वे ट्रैफिक से जो है वो मैच निकाल लेगी. Just let me know your thoughts, यार. I'll be waiting. And जो ज्वाइन कर रहे हैं यार स्ट्रीम में, let me know your thoughts. और मैंने एक पोल भी डाला हुआ है यार चैनल पे, अपना पोल भी कास्ट आप कर सकते हो. Who will win the match? That you can also do, and let me know your predictions as well. Portugal versus Croatia के लिए भी मैं लाइव आऊँगा. So yeah. Cucuella. It's a throw in for Austria. And Spain slowly shaping things up. थोड़ा पोजीशन रख रहे हैं वो बॉल का. And Lamine Yamal को यहाँ बहुत इंटरेस्टिंगली कैटर किया है अभी तक ऑस्ट्रिया ने. We have not seen like the Lamine Yamal we used to see at Barcelona. अभी तक हमें वो वर्जन ऑफ Lamine Yamal तो नजर नहीं आया. But yeah, he could slowly grow into the game as well. और उसको सिर्फ मोमेंट्स चाहिए होते हैं गेम चेंज करने के लिए. वो चीज भी है. अबे यार, it's a foul. I think Spain will get the free kick. Lamar with a foul on Pedro Porro. Pedro Porro is also a very exciting prospect. I think Tottenham शायद जितने प्लेयर ले रही है शायद बेचेगी तो नहीं, but I really would have wanted Manchester United to sign Pedro Porro as another option, because no right पे आपको कमी महसूस होती है. Only with डालो या अभी मजरॉय है, कोई बहुत ज्यादा आपके पास वहाँ पे आपके पास प्लेयर्स की कमी है थोड़ी. तो Pedro Porro could be a very decent option. Premier League experience भी है. It's a short free kick from Spain. Lamine Yamal, ओ भाई दो बंदों को तो डॉज कर गया into the box, लेकिन यहाँ पे फ्री किक टू ऑस्ट्रिया. फाउल कर दिया. आई थिंक साबिट्जर था. हाँ, Sabitzer actually is a technically very sound player. I think make a very short spell at United. Most of his career he has spent in Germany. यहाँ पे बॉल लूज कर दिया बहुत डेंजरस पोजीशन पे.
Oyarzabal and a good save from Schlager. What do you think, Kumar bhai? How are you seeing this match, and what would be the expected score line that you're seeing? Yaar, as long as Spain don't score a second goal like Austria still are in there, मतलब we cannot write them off. Yeah. अगर वो सेकंड गोल अभी तक नहीं करते, जो क्योंकि हाई लाइन पे मैंने वो बोला है कि यू आर ऑलवेज लायबल एट द बैक, या वहां पे आप गोल कंसीड कर सकते हो, तो 1-0 पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर स्पेन यहाँ पे सेकंड कर लेता है एज अर्ली एज पॉसिबल, आई थिंक कुड बी अ वन वे ट्रैफिक देन फ्रॉम बट अभी तक ये है कि ऑस्ट्रिया आर स्टिल इन देयर, ये मैं ये राइट ऑफ नहीं करूंगा अभी उनको कि यार कि आप ये सेकंड हाफ में देखें, प्लेइंग फ्रॉम द बैक दे हैव स्टार्टेड प्रेसिंग, दे हैव स्टार्टेड प्रेसिंग व्हिच वाज मिसिंग इन द फर्स्ट हाफ. तो वो चीज है, दे माइट लाइक राल्फ रागनिक, जितना भी प्रैग्मेटिक मैं उसे बोलूं, शायद उसने बोला होगा यार देयर इज ओनली वन वे टू नो थ्रेट स्पेन, कि आप थोड़ा प्रेस तो करो, लेट देम लूज द बॉल इन द हाफ, फिर आप थोड़ा अटैक कर सकते हो, लाइक क्योंकि अगर आप सुकून से पीछे लो ब्लॉक में चले जाओगे तो फिर आपको स्पेन at some time they will score a second easily. तो वो है कि आपको थोड़ा बहुत अटैकिंग इंटेंट दिखाना पड़ेगा, और क्योंकि काफी टीम्स में हमने देखा है, हाँ जैसे हमने कॉन्गो देखा, हमने जापान की साइड देखी, जिन्होंने पहला गोल स्कोर करके दे ट्राइड टू बी दैट लो ब्लॉक एंड नो इनवाइटेड द प्रेशर. तो अब यहाँ पे तो ऑस्ट्रिया ने तो खैर गोल तो किया नहीं है, बट स्टिल दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी दैट लो ब्लॉक और इनवाइट करें प्रेशर को, वो चीज है. Another very ordinary set piece from Spain. Like corner deliveries have been very poor, very poor. Especially from this side where Alex Boina takes the corners. यहाँ पे अच्छा अटैक बनता हुआ, लेकिन they lost the ball in the midfield. And now this could be a threat here. Dani Olmo. Nice. Good tackle. Not a foul. अबे यार कहाँ बैक पास दे दिया लमीन जमाल, और दिया भी किसको है? लमीन जमाल. Oh good yaar. Nice defensive work from Austria, but they have again lost the ball in the midfield. Boina, Kukuya, again Kukuya. Kukuya and so much space, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया था वहां से. Cleared off by Danso. Rodri. Ooh, that was close. It is a corner. हाथ लगा इसका? नहीं कॉर्नर नहीं, हाथ नहीं लगा, किसी प्लेयर का लगा. Another corner for Spain.
need a better delivery in the box. At least give a chance to Laporte, Kukuya, yeah. Another corner cleared off the near post. Now Spain is like slowly taking control of the game with the possession, which we didn't see in the first half, first quarter of the first half at least. But यहाँ पे यमाल निकल गया. Oh भाई, good tackle, good tackle, good tackle. Again lost the ball in the midfield, Austria. Rio Ferdinand in the crowd watching the match live. Spain on attack. Alex Boina. Cucurella. Rodri. Yamal to Pedro Porro. Cross blocked. Limer. निकल गया. Good. Sabitzer. Lima. Need a good ball. Oh my gosh. Close to Simon. स्पेन का XG 1.27, ऑस्ट्रिया का 0.03. Laporte, Alex Boina. अब बहुत कंट्रोल थोड़ा आ गया गेम में स्पेन के पास. Pedri, Alex Boina to Kukuya. Pedri. ओ गुड पास. जमाल के पास चांस हो सकता है यहाँ पे. Pedri looks injured.
Two more changes coming from Austrian side. और नाटोविच आ चुका है. Schmidt भी जा चुका है और Kaladic भी आ चुका है. Austria going all out attack now. Two new strikers. They need to score. Good passing. Sabitzer. Need a good ball in the box. Oh! Kaladic. Almost what he did against Algeria in the last match, coming off the bench in the 90 plus 5th minute. और साथ ही उसने गोल स्कोर कर दिया था. He did the same. और अब ये एरियल थ्रेट होगा स्पेन के लिए. लाइक Sabitzer will be asked to just put the balls in from good crosses in, and Kladisic, Arnautovic, they're good headers of the ball. Yamal. Oh, good block. अब थोड़ा मजा आने वाला है गाइस, क्योंकि आई थिंक फाइनली ऑस्ट्रिया ने थोड़ी अपनी अप्रोच चेंज कर लिया. अब या स्पेन सेकंड कर दे, खत्म हो जाएगा गेम, या फिर हम इक्वलाइजर देखेंगे शायद. ऑफसाइड हो गया. ऑफसाइड. Tadicic and Sabitzer combining well on the left side. Oh bhai, good ball. Simon. Well done. लेकिन यहाँ हेड इंजरी हो रही है आर्नाटोविच को. This is actually the game awareness of Unai Simon, जिसकी वजह से डेलाफोन जो है उसको स्टार्ट कराते हैं ओवर राया, coming off his line quickly and clearing it off. Brilliant from Unai Simon. In the progress, he has hurt himself and Arnautovic. It was a decent opportunity for Kaladic. ऐसे चांसेस आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे.
Again, Lima getting the better of Yamal. He's been, from what I've seen, he's been taken care of Yamal pretty well. Yeah. कोई threat नहीं है उस side से इतना ज़्यादा. Forcing Spain on to attack from the other side. Boyna, Olmo के पास बहुत स्पेस है भाई. कुकुया, Boyna, 2-0. Pedro Porro. So guys, I think this is pretty much game set and match Spain now. Good ball from Alex Boyna. What is this crazy celebration from Pedro Porro? Yeah, Boyna was onside. But what a good cross, yeah. This is the thing that Portugal is missing right now. ये जो Boyna ने to find out Pedro Porro to spot that run into the box. He was moving from the right hand side, and a brilliant cross actually that found the Pedro Porro. This is what we are missing with Portugal. We were missing with England as well. England के भी एक दो crosses के अलावा कल हमने देखा they were quite poor. तो ये Spanish team बहुत अच्छा कर रही है. And now after taking control of the game, they have also got that goal, जो कि अब उनको अब कोई मसला नहीं है. This was the killer blow, actually. The killer blow, really the killer blow. The dagger in the heart from the Spanish side of Austria. Good goal from Pedro Porro, yaar. I've always rated him as a. मैं भी बात यही कर रहा था. I have rated him well. His crosses are too good. Defensively भी ठीक है. Like he's good. And now we have the hydration break, guys. 67 minutes gone. The second half. The first hydration break of the second half. 23 मिनट का खेल जो है वो रहता है. And I don't think so there is anything for the Austrian side now in the game. 1-0 पे था, but not now. पापा पेरेज ने हमें ज्वाइन किया है. क्या हाल है भाई तैयब भाई, क्या हाल है? हेलो भाई, हेलो. मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ क्या हाल चाल है? कह रहे हैं स्टार्ट अच्छा था, अब वन साइड हो गए. हाँ, लाइक वही ना. ऑस्ट्रिया के पास चांस था यार. लाइक इन द स्टार्ट दे हैड, बट दे डिडंट कमिट मेनी बॉडीज अप फ्रंट. वो थोड़ा डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में खेल रहे थे, तो उन्होंने स्पेन को थोड़ा रोका. बट वही है कि डिफेंसिव अवेयरनेस, नॉट स्टॉपिंग ऑलवेज द बॉल इन दैट वन. लाइक इतना उसकी मूवमेंट नहीं कर पाए जज. तो वो चीज है. तो दिस इज व्हाट आई थिंक. थोड़ा ऑस्ट्रिया वहां पे अभी जैसे सेकंड गोल था, सेकंड गोल में भी जो है आपको वो क्रॉस ब्लॉक करना चाहिए था, एलेक्स बोइना वाला. पेड्रो पोरो ने जैसे रन मारी बॉक्स में, वो एक डिफेंसिव वो चीज नहीं है. आपने दिल रेसिकी से कोलैब नहीं, ये बेसिकली वी आर स्ट्रीमिंग ऑन लाइव ऑन बिग बात ऐप एज वेल. तो वी आर अ पैनल ऑफ गेस्ट joining on the app together and covering the match together. तो वो अदील रेसिकी भी उनके गेस्ट थे. so we were a joint panel for the analysis and everything. तो वो इसलिए था. उनके साथ मैंने मतलब मैं अपने अलोन कोलैब नहीं था. इट्स लाइक
separate collab. Austria striker is not. ऑस्ट्रिया का स्ट्राइकर अच्छा नहीं है यार. अभी वो अर्नाटोविच लेके आए हैं, क्लैडिसिच भी गोल मारा था उसने लास्ट मैच में अल्जीरिया के अगेंस्ट, तो वो भी है. बट वो ये है कि यार यू हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर द स्ट्राइकर. अभी जैसे एक चांस क्रिएट किया था क्लैडिसिच के लिए, ऐसे ही चांसेस आएंगे एंड यू हैव टू नो कन्वर्ट दोस चांसेस. स्पेन ने भी चांसेस बहुत ज्यादा नहीं बनाए, लाइक आप कहो कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया ऑस्ट्रिया को, बट जो चांसेस बनाए उनको उन्होंने फिनिश किया. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स. अच्छा कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक रैशफोर्ड आएगा यूनाइटेड? नो आई डोंट वांट रैशफोर्ड बैक यार. मैं कल भी स्ट्रीम पे भी बात कर रहा था, आई डोंट वांट रैशफोर्ड एनीवेयर नियर यूनाइटेड. आई थिंक शुड बी सोल्ड. लोन दे दो, सोल्ड कर दो, कुछ तो करो, बट डोंट वांट रैशफोर्ड बैक. आई डोंट सी हिज फ्यूचर बैक एट यूनाइटेड, because we will then be going back to the 3 years back if Rashford is back. So ये चीज है. I don't want him back. And for now, I want United to sign at least 2-3 midfielders in this transfer. मिकेल मेरेनो आ गए यार. I think यार मतलब क्या क्या साइड्स हैं यार. मतलब फैबियन रूइज बेंच पे, जुबिमेंडी बेंच पे. फैबियन रूइज चैंपियंस लीग विनर, जुबिमेंडी प्रीमियर लीग विनर. मतलब यार गावी बेंच पे, और they can play so much no stars यहाँ पे. अभी रॉड्री है, अभी यार पेड्री है. इतना कितना क्वालिटी भरी हुई है ना स्पेनिश साइड में. और अभी तो लमीन जमाल अपनी टॉप फॉर्म में नहीं है. ही इज स्टिल लुकिंग लाइक प्लेइंग विद अ वेरी 70-80% फिट लमीन जमाल. मुझे अभी वो नहीं लग रहा कि यार ही इज प्लेइंग ऑन हिज टॉप लेवल. वो चीज अब तो वही होगा यार. स्पेन जो करती है, जस्ट कीप द बॉल. ओ भाई यहाँ चांस है फेरन टोरेस के लिए. टोरेस के अच्छा, फेरन टोरेस भी एक अजीब स्ट्राइकर है यार. मतलब जब आप एक्साइटमेंट वाले उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना यार, यार अभी कुछ करने लगा है, यार अभी कुछ करने लगा है, उसके बाद वो कुछ नहीं करता. ऐसा स्ट्राइकर है फेरन टोरेस. Like he's been unlucky at times as well, but like I don't know यार. बार्सिलोना फैंस भी रोते हैं वैसे फेरन टोरेस को बहुत ज्यादा. और ये क्लैडिसिस से ना मुझे मुझे मिट्रोविच याद आ जाता है, सर्बियन स्ट्राइकर मिट्रोविच होता था. वो यूज्ड टू प्ले फॉर फुलहैम इन द प्रीमियर लीग एज वेल. तो वो है क्या, उसके सर पे बॉल दे दो तो वो इतने हेडर मारेगा ना यार, हर हर बॉल अंदर मारेगा नेट में. आई थिंक इज द हाईएस्ट सर्बियन गोल स्कोरर एज वेल, अलेक्जेंडर मिट्रोविच. तो क्लैडिसिस से भी मुझे वो थोड़ी बहुत वाइब्स आती हैं. सर पे बॉल दे दो वो कर लेगा कुछ ना कुछ. अब ये लाइमर की क्या बॉल थी यार. मतलब यू जस्ट गिविंग द बॉल अवे टू देम. नेक्स्ट मैच, हाँ जी नेक्स्ट मैच होगा यार. नेक्स्ट मैच होगा चैनल पे लाइव होगा 4 बजे. मॉड्रिच एंड रोनाल्डो, व्हाट आर मॉड्रिच? यार रोनाल्डो यार, ऑफ कोर्स रोनाल्डो. रोनी भाई, रोनी, ब्रूनो फर्नांडिस, डियोगो डालो. टीम पोर्चुगल. Danny Olmo back on the bench. And I'm not sure whether like Olmo deserves to start in this star-studded Spanish side or not. बड़ा वो है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है यार. वो स्टार्ट करता भी है, मतलब डिजर्व भी करता है या नहीं, बिकॉज दिस स्पेनिश मिडफील्ड इज स्टैक्ड. आप उस रोल में गावी को भी खिला सकते हो, आप उस रोल में पेड्री को भी खिला सकते हो. देन गेट फेबियन रूइज एंड रॉड्री बैक एंड देन प्ले पेड्री अ बिट फर्दर. बहुत सारे यार मतलब कॉम्बिनेशन हैं जो कि ट्राई हो सकते हैं, बट फाउल कर दिया कुकुरेला ने. या फड्डा हो गया गाइस.
या फड्डा हो गया, कोई रेड कार्ड ना मिल जाए यार। $75 minutes gone, guys, and Spain leading 2-0. Or Natovic goal kick. Good defending by Kobarsi. Good defending by Kobarsi. ओ भाई यहाँ गोल हो सकता है। Merino return ball was not good enough. कॉर्नर। ये तो हालात हैं यार ऑस्ट्रिया के यार। डेंसो भाई क्या कर रहे हो यार। Lamine Yamal taking the corner for Spain. They need a better delivery in the box. Far post और ये हेडर फेरन टोरेस का। दस मिनट पहले एक ऑस्ट्रिया ने चांस बनाया था अक्रॉस फ्रॉम साबित्सर टू क्लाडेसिच, जो कि अभी उसी वक्त आए थे पिच पे। तब से कोई 12-13 मिनट हो चुके हैं। They have not seen even a single cross for the strikers. So this is what you need to do more if you want to score. Otherwise, you are going out. Just take the next train to Vienna then. भाई क्रॉस दे दो। ये दे। ये अब ये क्या था साबित्सर? Need a better ball in the box यार। You have aerial ability, आप यूटिलाइज करो उसको। पॉश एलबा गुड, यहाँ पे गोल हो सकता है। ओ भाई साहब चुकू वाका वाका ने, ये क्या था भाई? व्हाट वाज दिस? ये हैरी केन बनना चाह रहा था यहाँ पे, बस सब कुछ कर लिया था यार, बस ऑन टारगेट नहीं रख सका। Did he really keep the ball in play? Brilliant यार। फेरन टोरेस जो है वो लेफ्ट पे खेल रहा है।
Don't worry, जो match has देखा gotten a है, little exciting, huh? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो बट पेस वो ये पकड़ लिया यार मैच। कि ऑस्ट्रिया they have been poor in the final third. Yeah, it's been. I think it's been a lot of mostly all Spain. If we talk about the second half, right? कंट्रोल ले आए They've ना had. वो गेम में, कंट्रोल ले आए तो फिर वो विद कंट्रोल दे जस्ट Mm, डोमिनेट देम। ओ भाई यहाँ very गोल हो good. सकता है। Oh, nice ball in. Good. I think Cucurella has been their man of the match for me, I think this match he's been so good, so good। गोल उसका डिसअलॉय कर दिया, फिर असिस्ट दे दिया, उसके बाद ऑलमोस्ट एज अ सेंटर फॉरवर्ड ही खेल रहा होता है वो, इतना फॉरवर्ड आया होता है। लेकिन मैं वही बात कर रहा था कि अभी वो दो स्ट्राइकर्स लेके आए हैं पिच पे ऑस्ट्रियन टीम, और उसके बाद एक क्रॉस आया सबिट्जर का, क्लैडिसिच ने वो हेडर मारा थोड़ा सा, लेकिन वो दैट वाज अ वेरी डिसेंट चांस। सो व्हेन यू हैव दैट एरियल एबिलिटी इन द बॉक्स यू शुड बी मेकिंग मोर क्रॉसेस। वो More क्रॉसेस crosses अब then. उसके बाद से अब तक कोई क्रॉस नहीं आया बॉक्स में, कि आप अपने स्ट्राइकर को यूज तो करो ना यार। Okay. ये एक और क्रॉस आया, Yeah, और yeah, yeah. ये Oh, yeah. Good. देखा Yeah, वाली बात है. Good ये cross. That was a good cross. ये चीज, या दिस इज मोर लाइक what they should be doing now। they have the aerial ability in there, but यार get it on target यार। कुकुरेला ने दोनों हेडर बड़े अच्छे डिफेंड किए यार। he has had enough like did enough to get it off target। और यहाँ स्पेन ऑन अटैक, यहाँ ऑस्ट्रिया खुल सकती है पीछे। लमीन जमाल, Hey. ये कौन है? टोरेस। Nice. टोरेस के बाद आगे बस आप उसके बाद आप सुकून करो यार, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। 8 मिनट का टाइम है भाई ऑस्ट्रिया के पास, वरना अगली वियना वाली ट्रेन पकड़ सकते हैं। ट्रेन तो है नहीं पकड़ेंगे वो। चलें फ्लाइट पकड़ते हैं यार। They've had their moments, Austria, but there was simply not enough for Spain, to be honest. So जो ही हमें देख रहे थे। नीड बेटर क्वालिटी। येलो कार्ड मिल चुका है गाइस पॉश को ऑन दैट फाउल ऑन कुकुया। अरे कैपो वर्डे वैसे अर्जेंटीना भी तो है कल ही है। जी हाँ, and it'll be an interesting one. I hope it is an interesting one sided ना हो यार, बस वो मुझे कैपो वर्डे का एक मोमेंट पे आप वो सोचते हैं कि वो डेफिनेटली वो आपको लगता है कि होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन we've seen them doing wonders, so we can't write them off, right? थोड़ा सा मुझे I feel happy when these sort of nations upsets तो मैं नहीं कहूँगा, but when they perform like this खुशी मिलती है। Like I expected a bit more from sides like maybe DR Congo, Senegal especially यार। मतलब आप एक एफकॉन की ट्रॉफी जो कि चलो कंट्रोवर्शियल कह लो, मोरक्को के साथ जो था फाइनल उनका, आप वो अगर विनर बन के आ रहे हो so you should be the one who should be dominating, but great ball यार, good ball, or is the ball चल Yamal, goal line clearance, off the line, good clearance, foul यार, foul हो गया। I think it was David Alaba, right player at the right place in the goal। यमाल का गोल नहीं आएगा आज।
ओ भाई साहब, what a clearance यार, what a clearance. This shows experience, this shows experience. और यमाल सब हो चुका है. He has been subbed now. Lamine Yamal. निको विलियम्स है, कौन है? अच्छा गावी है अभी एनाटोविच ऑफ साइड. ये तो ऑफ साइड रहने आया है बेंच से भाई, बेंच पे ही रह लेता है यार. अच्छा, हम अफ्रीकन टीम्स की बात कर रहे थे. तो उसमें ये कि लाइक आई वाज हैप्पी कि भाई 9 टीमें क्वालिफाई की हैं 10 में से. बट अब 9 में से कितनी रह गई हैं वो आपके सामने है. मेरा ख्याल है कोई शायद मोरक्को ही रहेगी, और कौन, अभी अल्जीरिया है, खैर वो भी आई थिंक विल लूज एज वेल. इजिप्ट है और अल्जीरिया, इन पे थोड़ी, इजिप्ट शायद कर जाए क्वालिफाई. बट like it would be a very good match वैसे, Australia versus Egypt. Another offside. Sort of balance लग रहा है ना. You can't really say कि बहुत ही आप कह रहे हैं बहुत ही strong team as against उनके as opponents, but yeah. ओ यहाँ पे पेड्रो पोरो का क्रॉस. ओ भाई साहब, गुड ब्लॉक, गुड ब्लॉक, गुड ब्लॉक. कुछ बहुत अच्छे ब्लॉक्स किए हैं ऑस्ट्रियन साइड ने यार, बहुत अच्छे. यहाँ पे अच्छा तालमेल बन रहा है. और क्लैडसिच, अबे यार यही मसला है ना यार. तीन मिनट है यार, अब तो ऑल आउट अटैक ही है. हम जैसे फीफा पे फॉर्मेशन चेंज कर लेते हैं ना, ऑल आउट अटैक भाई, सारे आगे भेज दो बस. अब तो वही है. और बहुत अच्छी निकाल ली है यार. यहाँ पे थ्रेटन, ये कौन है? मिकेल मेरिनो? नहीं, गावी गावी गावी. अब तो बहुत बिल्कुल वो मतलब pragmatic अप्रोच होगी है स्पेन की, जस्ट कीप द बॉल, सी इट आउट. दे वांट अटैक आई थिंक. एंड आई डोंट नो व्हाई डेलाफोंट यूजेस गावी ऑन द विंग. मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है. आई डोंट रियली थिंक ही इज अ विंगर, और ही हैज दैट no profile of a winger. I think is more like a central midfielder. मुझे नहीं लगता why he uses him on the wing. मेरी समझ से बाहर है. Mikel Merino to and Cucurella finally marching forward. Oh, what a ball, yaar! What a cross! This was what a cross! glorious. What a cross! What a cross! Man of the match, यार. मैं 10 मिनट पहले बोल चुका था मेरा मैन ऑफ द मैच Cucurella. The 3-0 up, and this was just sumptuous beautiful cross from the new Real Madrid left back. Surat, brilliant, yaar. And Oyarzabal again, right player at the right place, yaar. Right player at the right place. Always in there. Eagerly waiting for the replay. And there you go. He has that hunting वाली nature है उसकी इसमें ना. Always looking for, yeah, like check that. Look at that run. Look at that run. Yeah. Look at that run. लग रहा है FIFA खेल रहे हैं. हाँ. Look at that run, यार. Oh my God. Oh भाई साहब. पूरी Austrian side. This is the sort of Spain that we enjoy, you know. Yeah. और अभी ये मतलब it was not a very clean assist as well, but he still made it. यार, brilliant यार, brilliant all out. Really deserving Spanish side. ओ भाई, इसको क्या हो गया?
अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज रेड फॉरएवर ने ज्वाइन किया है मेरी स्ट्रीम एंड ही इज सेइंग एनी यूनाइटेड ट्रांसफर न्यूज़. यार, for now United is sorting out the midfield options. So we are interested in signing Tchouaméni from Real Madrid or Alex Scott from Bournemouth or both of them. So right now ये midfield वाला sorting out हो रही है. Matthews getting 250k and Tonali getting 30. Yes. Too much salaries for both of these. Like I know they were Premier League talents and Premier League experience and everything, but crazy amount of money Tottenham is paying to them. इतना United ने अपना सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा कर लिया था कि they couldn't afford to give this salary to the new players, new signings. तो वो चीजें नहीं दे सकते. Namecha to United नहीं. Namecha, I think Dortmund want more than 100 million, so United won't pay that much money. Spain playing decent football. Spain playing more than decent football. More than decent, yeah. I would say more than decent. Like really good football. Sabitzer, यार एक कॉन्सोलेशन ही कर लो यार, अब तो इंदर कुछ नहीं होने वाला लगता है. पोर्चुगल वर्सेस स्पेन ही होगा. मतलब आप क्रोएशिया को कह रहे हैं कि बस खत्म होने के लिए. They should not come for the match, yeah. Forfeit कर दें. Really want Portugal to going forward, हाँ. लेकिन मैं सच बताऊं, अगर आप कंट्रास्ट ड्रॉ करें ना, तो स्पेन वर्सेस क्रोएशिया से ज्यादा स्पेन वर्सेस पोर्चुगल ज्यादा एक्साइटिंग है. हाँ, वही ना, इसीलिए वो थोड़ा वर्ल्ड कप वाला एक वो मजा भी तो आना चाहिए, टॉप टीम्स फाइनली प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर. वो क्योंकि अभी तक तो एक आधी टॉप टीम निकल जाती है दरमियान से, वो फिर इजी फिक्सचर बन जाता है अगला वाला, तो वो चीज है. But I really want Cape Verde to get a result tomorrow. Really, yaar. That would be the story of the World Cup, FIFA World Cup. That would be the story of the Fabian Ruiz आ गया है, और कौन आ गया है? अमेरिक लपोर्ट की जगह कौन है? और मार्क पुबिल. ये किस क्लब की तरफ से खेलते हैं मार्क पुबिल? आई थिंक स्पेन में ही खेलते हैं. मार्क पुबिल. So he is 23 years of age and अच्छा, एटलेटिको मैड्रिड में है. एटलेटिको मैड्रिड में भी मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं देखा. वहां पे भी आई थिंक कम ही अपीयरेंसेस होंगी इसकी. हाँ, 19 मैचेस खेला है ला लीगा. स्पेन ने अभी तक गोल कंसीड किया वर्ल्ड कप में? हाँ, आई थिंक एक ड्रॉ किया था. गोल तो कंसीड नहीं किया. गोल कंसीड किया था, 1-1 था. अच्छा, 0-0 था. 0-0 था कैप वर्डे वाला. और जो आखिरी मैच था ग्रुप सीरीज का, वो भी आई थिंक सऊदी अरब वाला भी 3-0 था. नहीं, वाकई दे हैवंट कंसीडर्ड इट. बढ़िया. One of those sides alongside Mexico, who have not conceded a goal yet in the. नहीं, 0-0. Mexico. 0-0. Yeah. Defensively very sound, the Spanish side. अब तो खत्म ही हो गया. बस अब तो मैच एक्साइटमेंट भी नहीं आने देते कोई.
क्रॉस दे दो यार, और क्या करना है तुमने, वो भी काम कर नहीं दिया। Last 30 seconds, guys, and Spain is into the round of 16, and we are awaiting a potential quarterfinal, round of 16 after the FIFA 2010 World Cup, Portugal versus Spain. क्या पोर्चुगल बदला ले पाएगी राउंड ऑफ 16 में? साद भाई से मैं पूछना चाहूंगा, साद भाई, what is your say, how do you see Spain in the round of 16? Well, first we'll have to see how does how does it go in the next match, Croatia versus Portugal. उसके अंदर देखते हैं how does it go. So basically, Spain are through, and to be honest, it doesn't really tell you who won, but it tells you that this is the most complete team of the World Cup, Spain का, ठीक है. और आप देख लें 16 साल बाद भी नॉकआउट फेलियर के बाद they just ended that route in Los Angeles. और मुझे तो मजा आया देख के मोहन भाई. यार like the scoreline actually says that it would like was a one way traffic कि हम बिल्कुल demolish किया स्पेनिश साइड ने, but I think कि ऑस्ट्रिया के पास कहीं ना कहीं हाफ चांसेस जरूर थे, they just couldn't click through in the final third. वो final third में उनकी finishing लैक की, couldn't take the chances. मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि यार स्पेन ने बिल्कुल बरी कर दिया. Start of the match and in between somewhere like Austria did have their chances, but overall the control was with the Spanish side. They took their chances. Cucurella is playing on a very 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 different level. उसको मतलब रियल मैड्रिड में आने के बाद तो वो बिल्कुल ही एक नेक्स्ट लेवल पे लग रहा है कि यार ही इज वेरी हैप्पी विद द ट्रांसफर एज वेल. तो बड़ा अच्छा, मतलब उसको सब नहीं किया. उसने ग्रिमाल्डो भी ला सकता था, लेकिन कुकुरेला प्लेड द होल मैच. आई थिंक ही उसमें और ओइज़ाबाल में कोई एक बंदा मैन ऑफ द मैच होगा. पेड्रो पोरो हैड अ वेरी डिसेंट गेम, देन पेड्री आल्सो हैड अ वेरी डिसेंट गेम. रॉड्री कंट्रोल लेके आते हैं. मैंने वो बात की कि स्पेन के पास जो बंदे हैं, they have every profile of player. वो उनको जिस टाइप का फुटबॉल खेलना होता है उस टाइप का बंदा ले आता है मिडफील्ड में. उन्होंने भाई 2 गोल हो गए, अब हमने गेम कंट्रोल करनी है, लो भाई ये गेम कंट्रोलर ले आओ दरमियान में. हाँ जी, हमने अटैक करना है, आप एक अटैकर ले आओ, थोड़ा अटैकिंग इंटेंट दिखाओ. तो मतलब दिस इज समथिंग दैट इज वेरी रेयर टू सी इन एन इंटरनेशनल टीम. बहुत सारी इंटरनेशनल टीम्स के पास ये इस तरह से नहीं है, पूरा स्क्वाड डेप्थ उस तरह से जिस तरह से ये बना हुआ है स्पेन का. तो दे कुड डेफिनेटली बी menace for Portugal if Portugal reaches the round of 16, which we will see in the next match against Croatia at 4 a.m. So it was nice to see, and I think we will pretty much sum it up now the stream. And any last thoughts, Saad bhai? अच्छा, जाने से पहले मैं आपकी prediction लूंगा Portugal versus Croatia वाले मैच. So it's going to be it's going to be 1-0 to Portugal. 1-0 Portugal. हाँ, मुझे भी लग रहा है, but I think it could be more than 1-0. I think they could like I was reading the updates, तो Diogo Dalot भी शायद स्टार्ट कर रहा है, बर्नार्डो सिल्वा भी स्टार्ट कर रहा है. कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं जो उनके मैनेजर की तरफ से, but hopefully it is a good watch. So we'll see you guys for Portugal versus Croatia next, and thank you so much for joining. जो मेरे चैनल पे देख रहे थे, जो बिग बात पे देख रहे थे, भाई लाइक जरूर कर देना स्ट्रीम को wherever you are watching, and do join us again for the Portugal versus Croatian match. We'll see you live again soon. Take care.